Tamil Nadu government to file review petition against mandatory TET for in-service teachers. केम ग्राउंड रे फाइल करेंगे. In the wake of the Supreme Court's order causing a controversy regarding the mandatory teachers eligibility test for in-service teachers across India, the Tamil Nadu government has announced that it will file a review petition before the Apex Court. The Tamil Nadu School Education Minister Anvil Mahesh Poyamaji here on Thursday issued a press statement regarding the same. The Tamil Nadu government will file a review petition against the judgment delivered on September 8, जो September 1 रे जो जजमेंट होता ताको रिलीव रिव्यू पिटिशन करेंगे. In the statement by the School Education Department representing the Tamil Nadu government pointed out that if the top court's order is implemented in its present form, the ruling will cause mass compulsory retirement leaving school across Tamil Nadu with crippling the teacher shortage. यदि यह कार्यकारी करा जाए तेबे टीचर शॉर्टेज समस्या को सम्मुखीन करिबो तमिलनाडु गवर्नमेंट. Further, the department explained that the review petition will be filed on key grounds such as the right of children to free and compulsory education act 2009 under section 23 which regulates minimum qualification only for new appointment ପାଇଁ ସେଟା ଥିଲା. It does not authorize compulsory retirement of the teachers already in service. ଏହା ମଧ୍ୟ टीचर ମାନଙ୍କୁ compulsory retirement ର କଥା କହି नथिला. Additionally, the NCT notification released on 23 August 2010, which first introduced TET, clearly stated that its provision would not apply to teachers already appointed before that date. Also, the review petition will highlight that retrospective application of TET unsettles vested right of lawfully appointed teachers. जो मैंने lawfully appoint होइछन्ति सेमानकु मध्य ଏହା व्यथित करिवो, सेमानक न्याय को सेमानक प्रति अन्याय हेबो. एपटे सुप्रीम कोर्ट राय दर्शाई कमन 17 नंबर पॉइंट देखिपारे. कमन जजमेंट डेटेड 2 जून 2023 अंडर चैलेंज इन दिस अपील्स वाज पास्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट इन इंट्रा कोर्ट रीट अपील जुरिस्डिक्शन सेवरल इंडिविजुअल टीचर्स वर्किंग इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो केस टी होता टीचर मानक टीटी आवश्यकता अच्छी कि नहीं 1 to 3 by notification dated 29 July 2011 certain amendments made first notification without changing the requirement to qualify the TET pursuant to the NCT notification. Government of Tamil Nadu through its school education department issued GO 181 making the TET qualification mandatory for the state to be conducted by teachers recruitment board. These notification along with subsequent others laying down the procedure for conduct of TET were challenged before Madras court. Madras High Court रे चैलेंज होता जहाँ को तमिलनाडु सरकार मध्य जियो नंबर 181 मानि नहीं TET क्वालिफिकेशन मैंडेटरी बोली. द प्राइमरी ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर हु हैड नॉट क्लियर TET वाज दैट दे वर बीइंग डिनाइड प्रमोशन. TET जो मानकर नहीं से मानक प्रमोशन पे डिनाइड करा जायतला मना करा जायतला. whilst the teachers who possessed the TET had climbed the promotion ladder were holding higher post जो TET क्वालिफाई करिसेंती से माने प्रमोशन लैडर प्रमोशन सीढ़ी चढ़ुचंती एवं हायर पोस्ट को जाउचंती. पिटिशनर हैविंग बीन अपॉइंटेड प्रायर टू नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 पूर्व से पोस्टिंग पाइथिले. that they were not required to possess TET qualification either for promotion or continued service. According to them, TET could not be treated as a condition precedent for their continuation in service. से जो नॉन TET क्वालिफाइड टीचर्स माने जुक्ति थिला जे तांके से माने पूर्व नियुक्ति होइचंती समानक पई कंटिन्यू हो किबा प्रमोशन पई हो तांका पई कोनोसी आवश्यकता नाही TET रो जहाँ को विरोध होइथिला एवं सेमानक मना करा जायथिला TET बिना जेहेतु तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ को कंपलसरी करि सारिथिले. सरकार अधीन रे सेमाने काम करुथिले सेमाने यहाँ को विरोध करथिले जेहेतु मद्रास हाई कोर्ट रो ऑर्डर को कैरी आउट करि सारिथिले तमिलनाडु गवर्नमेंट. तेणु से अपील करते एवं जहाँ जजमेंट आसला आपण मैंने जानते जहाँकि गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा देखा परवर्ती अपडेट. प्रोविजनल लिस्ट फॉर असिस्टेंट बीओ प्रमोशंस अंडर क्लाउड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. जानते ओडिशा रे वर्तमान असिस्टेंट बीओ को प्रमोशन पर रही है जहाँकि टाइम्स ऑफ इंडिया तरफ ये रही सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो थिला नो TET नो प्रमोशन विदाउट TET नो प्रमोशन इज पॉसिबल बट इन ओडिशा असिस्टेंट ABO प्रमोशन हवा को जाउछंती बिना TET रे जहाँ को नहीं ये आर्टिकल टी बाहरी.
A provisional list prepared by the government for the promotion of assistant block education officers to block education officers. ABO ରୁ BO ଭାବେ posting ପାଇବା ପାଇଁ has run into the uncertainty after the Supreme Court judgment making the teacher eligibility test TT mandatory for any promotion. प्रत्येक promotion ପାଇଁ TT को mandatory କରିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍. Directorate of Elementary Education under the School and Mass Education Department on September 24 created a provisional gradation list for the promotion of officers for 2025. A total of 522 officers featured in the list. Total 522 जन ऑफिसर को नहीं गोटे ग्रेडेशन लिस्ट सेप्टेम्बर 24 तैयारी होती. ओडिशा एलिमेंटरी बीएड टीचर फेडरेशन एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द गवर्नमेंट मूव टू प्रमोट ऑफिसर्स हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द टीटी. ओईबीटीएफ यहाँ ओडिशा एलिमेंटरी बीएड टीचर फेडरेशन विरोध करिसेंती काहेकि ना एमाने टीटी पास करना. Despite the Supreme Court September 1 judgment which reaffirmed that TT is a mandatory provision for promotions, the department seems to be proceeding with the promotions of teachers without adhering to the requirement, said Federation President Ajay Kumar Dhar. जे कि कहिसेंती जे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर टीटी जेहेतु मैंडेटरी करा जाय प्रत्येक प्रमोशन पाई किंतु एठी जणा पडुछि जे बिना टीटी रे एमानको प्रमोशन दा पाई सरकार योजना करूछंती. Federation General Secretary Devendra Kumar Nayak said the Right to Education Act emphasizes the importance of qualified teachers and the Supreme Court judgment underscores the statutory provision promoting individuals to key positions like assistant BO or BO without ensuring they meet the TT eligibility criteria undermines the quality of education and violates the RT Act's provision, he added. The Secretary ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି. I urge the state government to respect the Supreme Court's judgment and RT Act statutory requirement. गवर्नमेंट को ସେମାନେ अनुरोध କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ମାନିବା ପାଇଁ. Ensuring that all promotion especially to critical roles like officers are made in accordance with these provisions is essential for maintaining educational standards, said Duryodhan Das, working president of the federation. जे କହିଛନ୍ତି ऑफिसर भଳି एक की पोस्ट को जीवा ପାଇଁ आपणकर एजुकेशनल स्टैंडर्ड बजाय रखापी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को मानवा दरकार. डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बालमुकुंद भैया सेड दे हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट फॉर क्लारिफिकेशन ऑन द इश्यू. डायरेक्टर एलिमेंटरी कहते जहाँ क्लारिफिकेशन मगा जाइए द ग्रेडेशन लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल नॉट ए फाइनल लिस्ट. आफ्टर गेटिंग क्लारिफिकेशन वी कैन टेक नेक्स्ट स्टेप. वी ऑल्सो सेंट द लिस्ट फॉर फील्ड वेरिफिकेशन ही एडेड. बालमुकुंद भैया जे कि बर्तमान डायरेक्टर एलिमेंटरी से कहते जे यहाँ आम प्रोविजनल ग्रेडेशन लिस्ट तैयारी करा फाइनाल नुहे और गवर्नमेंट को क्लारिफिकेशन मागिचु जे बिना टीटी रे प्रमोशन दि जापर कि नहीं. तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ खबर आसी पहुँचुचे ओडिशा रिगार्डिंग. देखा परवर्ती अपडेट.